Hello students, NCERT Solutions, Class 11th Physics, Chapter number 3, Motion in a Straight Line. Question number 10. A player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 meter per second. A part, what is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? B part, what are the velocity and the acceleration of the ball at the highest point of its motion? C. Choose the x is equal to 0 and t is equal to 0 be the location and the time at its highest point. Vertically downward direction to be positive direction of x-axis and give the signs of positions, velocity and acceleration of the ball during its upward motion. D part is to what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hands? Given g is equal to 9.8 meter per second square and neglect a resistance. In this question given that a player throws a ball, suppose here this player throw a ball and this is initial speed u is equal to 29.4 meter per second, right? And this is highest point and here the velocity is 0. At highest point velocity is 0. Right? Now, in first part, what is the direction of acceleration? First part में कहता है direction of acceleration. तो direction of acceleration is vertically downward because ball is moving under gravity. बॉल की मोशन अंडर ग्रेविटी है और ग्रेविटी का मतलब डायरेक्शन डाउनवर्ड, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है. हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू एट हाईएस्ट पॉइंट velocity of the ball is 0 and acceleration is equal to 9.8 meter per second square is vertically downward, right? हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड इक्वल टू जी. ना सी पार्ट में कहता है चूज द एक्स इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0 बी द लोकेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पर हमने एक्स इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड अपवर्ड डायरेक्शन को दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. देन vertical downward direction to be positive and give the sign of position, velocity and acceleration of the ball during the upward motion. तो upward motion में इनके साइन हमें बताने during upward motion सबसे पहले हमें साइन बताना पोजीशन का साइन अपवर्ड मोशन में
position is negative, upward during the upward motion, x की value negative and velocity is also negative. Because position negative, velocity is also negative, but acceleration is positive because it is under gravity. Now, during downward motion, डाउनवर्ड मोशन के लिए पोजीशन x हमारी पॉजिटिव, डाउनवर्ड में हमने कंसीडर किया हियर x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, तो दिस इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव. नाउ डी पार्ट, क्वेश्चन के डी पार्ट में कहते हैं डी पार्ट, दिस टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज. हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर हम अपवर्ड डायरेक्शन की मोशन कंसीडर कर रहे हैं. फॉर अपवर्ड मोशन, तो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, and here the velocity at highest point is 0 and initial velocity is minus 29.4 square is equal to this 2 into g into h, and from here this h is equal to minus this 29.4 whole square upon this is 2 into 9.8 is equal to this 44.1 meter. Here this negative sign indicates that distance covered in upward direction. Now time, क्वेश्चन में कहता है द also calculate after how long does the ball return to the player's hands. Again, from first equation, v is equal to u plus at. V is the final velocity at highest point. Therefore, this is 0, and initial velocity is minus 29.4, and acceleration is here 9.8 into t. Therefore, this t is equal to this 29.4 upon this 9.8 is equal to 3 seconds. So this is the time taken by the ball to reach the highest point, and hence total time after which the ball returns to player's hands is equal to 3 plus 3 is equal to 6 seconds. Time of ascent plus time of descent, this is total time after which the ball returns to player's hand. So this is the answer of this problem. Thank you.